Am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay, that's fine. So we were talking about working on your image, that you have to work on your image. If you work on your image, your impression, movement, attitude, grooming, and etiquette, so definitely it is going to increase your self-esteem. And when your self-esteem is high, definitely the way you interact with the people, the quality of that interaction will improve. And then communication skills, because if you do not communicate, if you remain angry, if you do not talk with the people, then what will happen? Who is going to fill that vacuum? The poison and misunderstandings and misrepresentation, everything like that is going to fill that vacuum. So you have to interact and communicate with the people. Never break down your communication with the people. When conversations move from casual to crucial, we are generally on our worst behavior. But what is the meaning of this one? इसका मतलब यह है कि जब भी हमारी जो कम्युनिकेशन है, जब हमारी मीटिंग हो रही होती है या हमें अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लोगों को ब्रीफ करना होता है, तो ऑटोमेटिकली हम डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। और जब हम डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं तो हम एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम एग्रेसिव होना शुरू होते हैं, हमारे वर्ड्स बेशक पोलाइट यूज हो रहे होते हैं, लेकिन हमारी टोन और हमारी बॉडी लैंग्वेज वो नेगेटिव चीज़ें कम्युनिकेट करती हैं, और उससे क्या होता है कि आपके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और जब ताल्लुकात ख़राब होते हैं, ज़ाहिर है फिर आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। इमोशंस डोंट एग्जैक्टली प्रिपेयर अस टू कन्वर्ट्स इफेक्टिवली, क्योंकि जब हम इमोशंस के अंदर होते हैं तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। एंगर कैन, इफ वी आर अंडर द इमोशन ऑफ एंगर और फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट, what kind of discussion we will be generating? That matters a lot. तो ये एक छोटा सा पिछले दिनों WHO का आया हुआ था कि जब हम एक्सेसिव वर्क करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमें वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका नतीजा जो अच्छे कंट्रीज हैं वहां पे क्या आ रहा है, अब दुबई ने 3 दिन का वीकेंड स्टार्ट कर दिया। आई एम नॉट सेइंग दैट यू पीपल गो टू दुबई, यू रिमेन हेयर, यू लिव हेयर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एरिया, कि आप अपने बायसेस के ऊपर काम करें, आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करें। तो देयर आर 5 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। व्हेन यू आर अलोन, माइंड योर थॉट्स। व्हेन यू आर विद फ्रेंड्स, माइंड योर टंग। सेल्फ कंट्रोल की सारी बातें। When you're angry, mind your temper, and when you're in trouble, mind your emotions. When God blesses you, mind your ego. तो फिर आप लोगों की खिदमत करें। And in the end, the last line by quote by Tolstoy: everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. So here I stop, and now we have plenty of time for question answer sessions. Whatever you people have understood out of this conversation, do share with me, and anything, any point come into your mind, please come up with that. Yes. Sir, I have one question here that when Sure. we talk about affirmations, so how affirmations works on our thought pattern? Does it improve our thinking and does it gives us positive thinking? How much it works and how it works? Affirmation means positive sentences, right? Yes, sir. Those sentences which give you power. For example, if you say that I'm confident and you keep on repeating, your brain start accepting it. This is what NLP works on. Affirmations play a very important role in improving your self-image, your self-esteem, and your confidence level as well. So affirmation are very much important, and I would suggest The Greatest Salesman of the World. I think that's the name of the book, which gives lot of self affirmations. ठीक है, उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होगा इन तमाम चीज़ों के बारे में। और दूसरी चीज़ आप ये भी, यस मैम, Faria wants to say she's an NLP expert and definitely. No, I'm not an expert. I'm just a master practitioner. The thing is कि जब ये affirmations की बात हो रही है, affirmations को 2 चीजों का बहुत ख्याल रखना है। एक तो the physiology you say it with,
and the conviction you say it with, and the continuity you say it with. I mean, it's like you have to believe that you already are in that state, and the way you talk, the way you say it, your physiology, your words, and your actions should all go towards it, and that kind of changes your entire behavior and personality. All right. Thank you, ma'am. Yes, anything else? One more thing, make your own affirmations, please. All right. The things which we want to change in our life, or something which we need to do, in that sense, you are talking about. If I'm not confident and I want to be confident, then I go and say, I'm confident. We made one, I can share it with you if Tariq Sahib allows. Yes, yes, sure, ma'am. It's like all I need is within me now. I'm confident, I can do it. Yes. I mean, with that kind of belief in yourself, with that kind of feeling in yourself. That thing I mean. Thank you. All right. ये बेसिकली जो आपके स्क्रिप्टिंग है ना, आपके अंदर स्क्रिप्ट हैं, डिफरेंट स्क्रिप्ट हैं, वट एवर यूर टॉकिंग, दिस इज द रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द स्क्रिप्ट जो अर्ली टाइम से आपके अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो ये उस स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करते हैं, तो ये भी स्क्रिप्ट हैं। जब आप एक नया स्क्रिप्ट रीड करती हैं तो आपको पुराने को अनलर्न करना होता है और इसको आपको रीलर्न करना होता है, तो इसको आपको अच्छी चेंज आती है। मैं एक एक्टिविटी जब मैं नर्स में टीच कर रहा था बच्चों को, अक्सर एक अंडर ग्रेजुएट्स का एक्टिविटी करवाता था, मैं उन्हें कहता था कि क्लास में पढ़ाते पढ़ाते एकदम थोड़ा पॉज लें, अपना मोबाइल निकालें और अपनी फोटो ले लें जिस पॉज में आप बैठे हुए हैं, जिस पोस्चर में, जिस पोज में वो बैठे हुए हैं, अपनी एक फोटो ले लें मोबाइल पे। वो ले लेते थे। फिर मैं कहता यू वियर योर बेस्ट ऑफ स्माइल, और एक फोटो वो ले लें, तो वो दूसरी फोटो ले लेते थे। फिर उन दोनों फोटो को मिला के वो जैसे फेसबुक के ऊपर हम लगाते हैं, तो मैं कहता था अब आपने सुबह उठ के इस तस्वीर को रोजाना देखना है, और ये डिसीजन आपने लेना है कि व्हेन यू आर गोइंग टू द क्लास एंड टू योर यूनिवर्सिटी, विच फेस यू वुड लाइक टू गो विद, ठीक है। तो वो खुद ही देखे, तो फिर जब देखे आपकी थॉट्स अच्छी हैं, आपके अंदर एक हैप्पीनेस का एलिमेंट है, आपके अंदर मूड स्विंग्स नहीं आ रहे, तो फिर आप स्ट्रेसेस को, तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे, लोगों के साथ आपका बिहेवियर इंप्रूव हो जाएगा। एंड आई एम श्योर कि मैम फातिमा, पहले भी हमने एक वेबिनार किया था स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, और मैंने उसमें काफ़ी डिटेल के ऊपर रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब के बारे में बात की थी, और आपने शायद 5 AM क्लब उसको फॉलो भी करना शुरू किया था। वुड यू लाइक टू शेयर एनी चेंज विद द पार्टिसिपेंट्स? Sir, I want to say that I followed some of the thing of that book, 5 a.m. Club, but I wasn't consistent, to be honest here. So I did for a month. There was a change, a positive impact, but because of the change of my schedule and timings, I wasn't able to continue that. So sometimes this happens that when we talk about the changing of our pattern or something, the consistency also plays a very important role. Yes. You see, it is basically your mental health. If your mental health is very fine, okay, then your relation with your parents, with your children, with your school management, and with your relatives, they will improve. लेकिन अगर आप थके हुए हैं, हर वक्त सड़े हुए हैं, और आपके अंदर से वो एनर्जी ड्रेन आउट हो चुकी है, तो फिर आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी उससे अफेक्ट होगी, और नतीजा से आपका एंड में स्ट्रेस ही है। स्ट्रेस वो जो आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। Yes, Abhi Saab, you would like to say something? Ma'am Sobia. Yes, ma'am, Faria, sure. Sorry. एक और बात. Like I tell everybody, never use the word not to yourself. Because आपका brain not को जो है पढ़ता नहीं है. Not is not an image, and your brain reads in images. So other than saying, I'm not going to think about it, I'm not going to worry about it, tell your brain what you want it to do. So I have so much more to think about. I'm whatever the positive things you can think about, other than saying no to yourself. So do not ever say, okay, I'm not going to do something. Because वो जब आप ये कहते रहते हो, तो the brain के लिए आपके लिए the words are, I am going to do that thing.
और आपकी बारी ज्यादा बढ़ती है। एग्जाम्पल इज, आप बच्चे को ट्रे दे दें और बोले नहीं गिराओ नहीं गिराओ नहीं गिराओ, ला महाला वो गिराएगा। आप उसको बोलो संभल के चलो, ख्याल करो एंड ऑल दैट, चांसेस है वो नहीं गिराएगा। So in the same way, tell your brain what you want it to do, because you control your brain doesn't control you. Thank you. Sorry again. Yes, no, most welcome, ma'am. एंड मैम आई थिंक सो कि यही चीज हमारे अंदर एंजाइटी भी क्रिएट करता है। जब हम नॉट की बात करते हैं तो हम फ्यूचर की तरफ भी चले जाते हैं कि नहीं ये नहीं होगा या ऐसे नहीं होगा। तो दिस Exactly. कैन बी आल्सो वन सोर्स ऑफ एंजाइटी, राइट? Exactly. I have right now, and anxiety को दूर रखने का एक ही तरीका है, just stay in the present. Right. And I think this is called conversational hypnosis. कि जब आप किसी को नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं, Yes. बार बार बोलते रहते हैं, तो उसके अंदर वो एक चीज डेवलप होना शुरू हो जाती है। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sorry, I was late to join the meeting, and I don't know what the discussion has done before that. So, Assalamu alaikum to all, and I'm a teacher. My name is Sobia Farhan, and I'm a writer as well. And my books are being taught in schools in Karachi and Islamabad as well. Stress is the main issue for every person in the world. I must say that for me, the future is the main cause of for the stress, because I have my kids, they are studying in the universities, and you know what, the age level and what is the for that students of university. And the main thing is the generation gap between me and my children. I think it is a big cause. I tried to do my best. I'm failed for that because I'm too much busy in my job, in my business, in writing content and so many around home chores, and I want to make a good relation with. I just ignore. In the मैंने उनको ignore किया है. I realized, but इसको अच्छा cater कर सकूं because they are माशाल्लाह 21 and 20 years old. तो कैसे मुझे उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए, किस तरह अपने आप को कितनी जगह बाउंड करे. आई वांट टू बी अ गुड हाउसवाइफ, आई वांट टू बी अ गुड राइटर, अ गुड टीचर. सो मतलब अ गुड मदर. मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको एज अ फ्रेंड डील करूँ. तो क्या आप मुझे क्या टिप्स देंगे उसके लिए? Okay, yes, anyone who would like to come up? In my opinion, I think that you have to set your priorities. Priority number 1, priority number 2, priority number 3, and priority number 4. Top priority goes with the children because in some way or the other way, their future is being controlled with the type of relationship they're having with the parents. तो उसके लिए यही हो सकता है कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा. आप जब उनकी छुट्टियां होती हैं उनको कहीं घुमाने लेके जाएं, किसी भी तरीके से ऐसा टाइम, क्वालिटी टाइम गुजारें ताकि आपके अपने बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन डेवलप हो, एक ट्रस्ट डेवलप हो. वो चीज़ें आपसे शेयर करें और आप उनसे चीज़ें शेयर करें और आपके जो रिलेशनशिप है वो कम्युनिकेशन के ज़रिए बहुत बेहतर हो जाए. दूसरा, आप अपनी ज़िंदगी में देखें कि वो काम जो आप आउटसोर्स कर सकती हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड बंदे हायर कर सकती हैं, इफ यू कैन अफोर्ड टू दैट. आप उनको आउटसोर्स करने की कोशिश करें, ठीक है. और
अपने और बच्चों के लाइफस्टाइल को मैच करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर बच्चे हमसे इग्नोर हो जाते हैं तो देन डेफिनेटली एवरीथिंग गोज, एंड नो डाउट फाइनेंस इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रन द हाउस एंड टू पे द फीसेस एंड एवरीथिंग। तो एक बैलेंस थोड़ा सा स्ट्राइक करने की जरूरत है उनके साथ, और बच्चों को एक फ्रेंडली तरीके से उनके साथ अटैच होने की जरूरत है। यस मिस्टर आबिद, वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन टू दैट? Not really. I actually don't get a lot of stresses in my life, actually. Yes, there are stresses, but whenever I disassociate myself from like lots of worldly things in my mind, I guess like I get a lot of like calmness in my mind. Um, I get out of the stress the moment I start thinking that this is just a petty thing. Why are you stressed about? Even if it is like a matter of a job or a matter of family, you just like take it lightly. So and then this is like a kind of a kickstarter that it gives me, that you can get out of it very easily. The moment you start thinking about the issue, that the issue is not that big, right? So I would say that taking things holistically works very well, rather than taking each individual thing like mm, as if it's the only thing or it's the last thing. So for example, like throughout your life you have been facing or you have faced a lot of things in your life. There have been so many issues, there have been so many people who just like came, went, and then you also passed through a lot of things. So if you start thinking about those things, so almost like I would say that 90% of the things like had no significant effect in your future. Yes, 10% might have definitely, but 90% of the things that you were stressed at that time had no have no impact in your life. So currently, like things around you, you just start taking them lightly. Don't get stressed. So even if it is finances, just smile, like calm yourself down, talk to your friend, talk to your family, and like get into more socialization, because and the world is becoming so much like individualized. So we're kind of living in a cocooned life. So even if like we are hanging with families, we consider that family is the only thing. But then going out with your friends and spending, I like to travel a lot. I travel like across Pakistan a lot. Out of my school routine, like I just like take out time and I travel. And that's one of the best things that I find to manage my stress. Even I'm stressed, so you go some exercise, you just take them things lightly, you just like take a break. And then that break is like kind of a thing that sometimes you think, oh no, 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 it's gonna hurt me financially. I like they gotta deduct my salary. I say to myself, no issue, let them deduct. But like it's not at the cost of your health. It's not at the cost of your like mental health. So let them deduct. And I've been doing it like for the last like 5 or 7 years. And Alhamdulillah, I've been so successful in this. The moment I think that I need a break, I just like take a break. I don't think that I'm gonna lose like this amount of my money. No issue. Let it lose. And I have no regrets about that. So I find it very easy. It's not that difficult for me like to manage stress, because I want to live my life, right? Rather than like the life that people tell me what to live. So this also manages. So what are we doing actually? We're trying to fulfill others' expectations in life, right? So you're not living your life actually. You're not living your life. You're living others' life, others' expectations, others' expected life. So so I would say that like living your own life, taking things lightly, travel, hanging out with friends, exercise,
It's a great way to like manage stress. I don't know. Maybe I'm wrong for some of you. Thank you very much, Mr. Abid. Very optimistic and positive approach, and very true. Because if we are stuck in the same situation, that affects us. So traveling, going out, changing places, and interacting with the friends, having friends is very much important in life. Those who understand you, just like in the discussion we shared that surround yourself with the people who are not energy drainers, but rather they give you energy. They appreciate you. They applaud you. They acknowledge your contribution in your life, in their life. That's very much important. और मुझे याद है कि फ्रांसिस बेकन ने बड़ी जबरदस्त बात की थी. उसने कहा था कि फ्रेंडलेस पर्सन्स आर कैनिबल्स अनटू देयर ओन हार्ट. जिन लोगों के दोस्त नहीं होते, वो उस कैनिबल बर्ड्स की तरह हैं, जिसकी डेथ इस तरीके से होती है कि वो बाकी परिंदों को मारता है और उनका कलेजा चबाता है, और एंड में जब उसे कोई नहीं मिलता तो अपना कलेजा चबा के तो उसकी डेथ हो जाती है. कैनिमल्स उस टाइप का. एनिमल किंग्स हैव फेल्ट द नीड ऑफ द फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू बेकन, एंड यस आई डू एग्री. और ये बड़ी ज़बरदस्त इनकी अप्रोच है. और फिर ये भी एक बात हमें देखनी चाहिए कि जो 20 साल की रिसर्च है स्टीफन आर कॉवी की 7 हैबिट्स में, जो वो कहता है कि सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो चीज़ें जिनके ऊपर आपका काबू है, आप वो करें, ना कि वो चीज़ें जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है और आप उसके ऊपर अपनी एनर्जी लगा रहे हैं. तो यस मिस सोबिया, वुड यू लाइक टू से समथिंग एल्स? थैंक यू वेरी मच सर. वॉइस इज वेरी लो, तो मुझे थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम हो रही है. बट आई फील वेरी गुड टॉकिंग विद यू पीपल. अच्छे लोगों के साथ आप जब उनकी कंपनी में होते हैं तो आप बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह जो बैकग्राउंड है, और जो आई हैव सम वेरी गुड फ्रेंड्स विद मी. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आप फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो आपको गुड एंड बैड भी आपका बताते हैं, लेकिन ये कि वो आपको टॉन्ट नहीं करते और आपको पुशअप करते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी लाइफ के अंदर. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी यही रहा है कि बहुत बड़े डाउनफॉल से मैं बहुत अपने आप को ऊपर लेकर आई हूँ. तो वो मेरे फ्रेंड्स का साथ बहुत था और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मुझे. और उसके अलावा जो फैमिली मेम्बर्स, माय हस्बैंड, मतलब ये आपके जो एलिमेंट्स होते हैं लाइफ के अंदर, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होता है, आई होप कि आप लोग एग्री करोगे कि कुछ लोग जो आपको नेगेटिव अप्रोच दे रहे होते हैं, जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स मिल रही होती हैं, वो भी आपको एक बहुत बड़ा पुशअप दे रहे होते हैं टूवर्ड्स द सक्सेस. क्योंकि मैंने ऐसा फील किया कि आप में एक ऐसी एनर्जी पैदा हो जाती है कि अब आप उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है कि अब अपने आप को प्रूफ करके दिखाएंगे. तो वो चीज़ मतलब समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि हमें पीछे मुड़ के उन लोगों को भी थैंक्स करना चाहिए कि जिन्होंने हमें कहा था यू कैन नॉट डू दिस. जी बिल्कुल ऐसा ही है. दैट्स कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. आप, और यही चीज़ है कि हम अब अंदर से अगर स्ट्रांग हैं, हमारी थॉट्स पॉजिटिव हैं, तो हम नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव लेते हैं, और हम वीकनेस से भी स्ट्रेंथ ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो गाइस, थैंक यू वेरी मच that you came here and we had a hearty talk, and I will try to put today's session recording on my YouTube channel, and I will share the link ताकि बाद में भी आप देखना चाहें. And if you people say, so I will share the slides with you in the group as well, ताकि आप इनको go through कर लें. Please share the slides, and thank you for a lovely presentation. Thank you so Thank you much, very sir. much. More than presentation, the main point was that we should talk and we should interact. Excellent. Okay, thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.